तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन 1, द डिग्रेडेटिव प्रोसेस कंसर्न विद द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू सिंपलर वंस along with release of energy is, ठीक है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए एनाबोलिज्म, ऑप्शन बी कैटाबोलिज्म, ऑप्शन सी मेटाबोलिज्म एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो यहाँ पे आंसर इज कैटाबोलिज्म, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज ऑप्शन ए यस माइटोकॉन्ड्रिया, करेक्ट वन। नेक्स्ट, the general formula of monosaccharides is CnH2nOn. correct, CnH2nOn, okay। Then next, one of the following is not an aldose. So glucose, galactose, mannose, fructose. Aldose, which one is not aldose? Fructose. Yes, fructose. Fructose is not aldose. फ्रुक्टोज इज कीटोज। फ्रुक्टोज क्या है? वो कीटोज है, ओके। नेक्स्ट, टू शुगर्स व्हिच डिफर फ्रॉम वन अनदर ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड अ सिंगल कार्बन एटम आर टर्म्ड, तो ए इपीमर्स, बी एनोमर्स, सी ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड डी स्टीरियो आइसोमर्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Epimers. इपीमर्स, करेक्ट, इपीमर्स। तो इपीमर्स के बारे में यदि कहा जाए तो जैसे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज है, तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर इपीमर्स एट कार्बन 4। यदि ग्लूकोज और मैनोज की बात की जाए, ग्लूकोज एंड मैनोज, तो ग्लूकोज एंड मैनोज आर इपीमर्स एट कार्बन 2, ठीक है। तो ग्लूकोज और मैनोज में कार्बन 2 पे डिफरेंस आता है एंड ग्लूकोज और गैलेक्टोज पे कार्बन 4 पे डिफरेंस आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, न्यूटा रोटेशन रेफर्स टू चेंज इन Optical rotation. करेक्ट, ऑप्टिकल रोटेशन, ओके। Then lactate form in muscles can be utilized through, okay, Forest cycle. correct, Forest cycle हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया, right। Then next, the number of molecules of ATP produced by the total oxidation of acetyl coenzyme A in PCA cycle is 12. Pyrohexane. 6, 8, 10, 12. How many? कितने? 12. 12, okay, that is 12, ठीक है। Next question, synthesis of glucose from amino acids is termed as glycolysis, gluconeogenesis, glycogenesis and lipogenesis। क्या है? Glycolysis, Gluconeogenesis. correct, gluconeogenesis। What is the definition of gluconeogenesis? So it is the synthesis of glucose from non-carbohydrate molecules, ठीक है। मतलब प्रोटीन है या लिपिड्स है, फैटी एसिड्स है, उससे यदि ग्लूकोज बनता है तो दैट इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इज, व्हिच वन इज द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड? ऑप्शन मेथिओनिन, ल्यूसीन, वेलिन, एस्पार्जिन। कौन सा है? Methionine. करेक्ट, मेथिओनिन इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। मेथिओनिन के अलावा कौन सा है? दो और है जो सल्फर कंटेनिंग है, वो कौन से हैं? Cysteine and cysteine. Yes, cysteine and cysteine, right। Then next, an amino acid in human is, sorry, an essential amino acid, an essential amino acid in human is, कौन सा essential? A aspartate, B tyrosine, C methionine and D serine। So which one is essential? Methionine. Correct, methionine is essential amino acid, okay। Then next, the protein present in hair is, hair में कौन सा प्रोटीन? केराटिन, correct, keratin, okay। Then next, control of urea cycle involves the enzyme A carbamyl phosphate synthetase, B ornithine transcarbamylase, C argininosuccinase and D arginase। तो कौन सा एंजाइम यूरिया साइकिल को कंट्रोल करता है? Carbamyl phosphate synthetase. करेक्ट, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। ये एंजाइम, दिस एंजाइम कंट्रोल्स यूरिया साइकिल। क्या रोल है इस एंजाइम का? व्हाट इज द रोल ऑफ दिस एंजाइम?
तो कार्बोनिल It फॉस्फेट converts क्या करता है? कार्बोनिल फॉस्फेट बनाता है। किससे बनाता है कार्बोनिल फॉस्फेट? तो यहाँ पे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉस्फेट आर कंडेंस्ड to form carbonyl phosphate in presence of carbonyl phosphate synthetase। ठीक है, तो carbonyl phosphate synthetase एंजाइम के प्रेजेंस में अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉस्फेट ग्रुप कंडेंस होते हैं टू फॉर्म carbonyl phosphate। देन नेक्स्ट, a compound serving a link between citric acid cycle and urea cycle is fumarate। करेक्ट, fumarate। ओके, तो यहाँ पे जो आर्जिनिनोसक्सिनेट फॉर्म होता है, ठीक है, आर्जिनिनोसक्सिनेट यूरिया साइकिल में, तो ये आर्जिनिनोसक्सिनेट क्लीव्ड होता है, ब्रेक होता है आर्जिनिन और फ्यूमारेट में। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा आता है? तो यहाँ पे आर्जिनिनोसक्सिनेज एंजाइम आता है। तो आर्जिनिनोसक्सिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में आर्जिनिनोसक्सिनेट ब्रेक होता है आर्जिनिन एंड फ्यूमारेट में, और फ्यूमारेट जाता है टीसीएस साइकिल में। ठीक है, then next, primary structure of a protein is formed by peptide bond। correct, peptide bonds। okay, primary structure में peptide bonds होते हैं। what are peptide bonds? क्या है peptide bonds? simply peptide bonds are CONH bond, CONH। ठीक है, that is the peptide bond simply। then next, kwashiorkor occurs when the diet is severely deficient in iron, proteins। करेक्ट, प्रोटीन्स, प्रोटीन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो क्वाशियोरकर होता है, ये जनरली 1 to 5 इयर्स के चिल्ड्रन में होता है। चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 5 इयर्स में दिखाई देता है क्वाशियोरकर, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज। देन नेक्स्ट, एन एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड इज, सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल क्या है? ए पाल्मिटिक एसिड, बी ओलिक एसिड, सी लिनोलिक एसिड एंड डी पिरुसिक एसिड। So which one is the saturated fatty acid? It is palmitic acid। Yeah, palmitic is saturated fatty acid। What does it mean? Saturated fatty acid का मतलब क्या है? Single bond। Yes, all are single bond। उसमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं। That is the saturated fatty acids। Next, non-essential fatty acid is A linoleic acid, B linolenic acid, C arachidonic acid and D stearic acid। तो इसमें नॉन एसेंशियल फैटी एसिड कौन सा है? स्टेरिक एसिड। करेक्ट, स्टेरिक एसिड इज नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? नॉन एसेंशियल का मतलब क्या होता है? नॉन एसेंशियल फैटी एसिड का मतलब It synthesized in body। यस, it can be synthesized by the body, right? Okay. Next, the cholesterol molecule is benzene derivative, phenolene derivative, steroid and straight chain acid। what is इसमें से क्या है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल? कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर याद है आप लोगों को? कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है, स्टेरॉइड, इट इज स्टेरॉइड। कोलेस्टेरॉल, स्टेरॉल, देखिए नाम में स्टेरॉल है, नाम में स्टेरॉल है, तो इट इज स्टेरॉइड। ठीक है, तो द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल इज स्टेरॉइड। ठीक है, स्टेरॉइड का नेम क्या है, केमिकल नेम? दैट इज साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफेनेंथ्रिन रिंग। हम लोगों ने डिस्कस किया था, साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफेनेंथ्रिन रिंग। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द नाइट्रोजनियस बेस इन लेसिथिन इज। ओके, तो क्या है, कौन सा बेस है लेसिथिन में? ए इथेनोलामाइन, बी कोलिन, सी सेरिन एंड डी बिटेन। तो ओके, फर्स्ट टेल मी व्हाट इज लेसिथिन। लेसिथिन क्या है? तो लेसिथिन इज ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड विच इज अ टाइप ऑफ कंपाउंड लिपिड। लिपिड में कंपाउंड लिपिड्स में ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का एग्जांपल है लेसिथिन। ठीक है, तो लेसिथिन में कोलिन होता है। व्हाट डज इट कंटेन? इट कंटेन्स कोलिन। ठीक है, तो द नाइट्रोजनियस बेस इन लेसिथिन इज कोलिन।